Again, good morning, everyone. Now, I already told you about the need for rational number. In this segment, I will tell you about what are rational number, definition of rational number. Because I don't have book, that's that's why I am using this phone. Okay. What are rational numbers? According to the definition which is in your book, a rational number is please see the page number 174. A rational number is defined as a number that can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Very important thing. Any number in the universe called rational number if we represent that numbers in the form of p by q. Let me clear you one thing, that this is rational number, this is rational number, this is rational number. Okay, ये सब rational number है because this is in the form of p by q where q is not equal to 0. Means दुनिया के सारे number, every number in the universe is called rational number if we can represent that number in the form of p by q. And remember one very important thing, that q is not equal to 0. Suppose देखो जैसे 6 is a rational number or not? Yes, 6 is a rational number because we can represent this 6 in the form of 6 by 1. We can write this 6 in the form of 6 by 1 लिख सकते हैं. So this is the form of p by q and q is not equal to 0. So this is rational number. So this is rational number. Now tell me 7 is a rational number or not? Yes, 7 is a rational number because we can represent 7 in the form of 7 by 1 which is in the form of p by q and q is not equal to 0. Means अगर हम किसी भी नंबर को p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो that number will call rational number. And remember one very important thing, that denominator will not be 0. अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सपोज ये हमारे पास एक है 4/5. The 4 is numerator and this 5 is denominator. This 4 is numerator, this 5 is denominator. Okay, I am going to tell you the definition of numerator and denominator. Numerator और denominator होता क्या है? For this, I will make a beautiful drawing of bozo. This is the belt of bozo, or you can say that this is the waist of bozo. Okay, so if you are having pain, then lower part means like this is bozo p by q. P is the upper part from this side and q is the lower part of this side. Suppose we have the lower part of the body, the lower part of the below waist, below your waist or below your waist. The lower part of the body is called denominator and the upper part of the body is called numerator. From now onwards, if you are having pain in your leg, then what you will say to your mom, that mama, I am having pain in my denominator. आज के बाद से जब आपके पैर में दर्द होगा तो आप क्या कहोगे? मम्मा, आई एम हैविंग, बिकॉज यू आर द मैथमेटिक्स स्टूडेंट, यू आर so talk like mathematician. From now onwards, if you are having pain in your leg, then what you will say to your mom? That mama, I am having pain in my denominator. And if you are having pain in your head, then what you will say to your mom? That mama, I am having pain in my numerator. Numerator and that is denominator. Okay, clear? So p by q. So p is numerator. This is numerator. This is numerator. This is numerator, and this is denominator. Okay, numerator and denominator. P by q, rational number is समझ में आ गया? The upper part of this is the sign of division, and the upper part is called numerator and the lower part is called denominator. Clear? This is the definition of rational number. Now numerator and denominator ये हो गया हमारा. Now the next one is equivalent rational number. Please see page number 175. Equivalent rational number. Equivalent rational number is what? A rational number can be written with different numerators and denominator. For example, consider the rational number -2/3. -2/3.
2 by minus 2 by 3. So minus, if we want to write the equivalent rational number of minus 2 by 3, so we will multiply it by the same number. ठीक है, हम same number से in numerator and denominator we will multiply by same numbers. So when we multiply numerator and denominator by 3, we will get minus 6 by 9. Minus 6 by 9 is same as minus 2 by 3. Clear? This is equivalent fraction of minus 2 by 3. Equivalent fraction समझ में है? When you if you want to find the equivalent fraction of any rational number, then multiply the numerator and denominator by the same number. It is also written in your book. Please see page number 175. By multiplying the numerator and denominator of a rational number by the same non-zero integer, we obtain another rational number. अच्छा, why it is written non-zero integer? क्यों यहाँ पे non-zero integer लिखा हुआ? Because we have to multiply the numerator and denominator by non-zero integers. If we multiply the numerator and denominator by 0, so what we will get? Suppose if we multiply the numerator and denominator by 0, so we will get minus 0 upon 0, which is not true. ये कोई सेंस नहीं, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना है according to the definition of rational number, and it is not defined also. This is exactly like obtaining equivalent fraction. जैसे हम लोग फ्रैक्शन में करते थे, that is same. Positive and negative rational number. According to the definition, such a rational number, consider the rational number. चलो मैं तुम्हें बता रहा हूँ. Positive integers, such a rational number called positive integers. Numerator and is the numerator of minus 3 by 5 is a negative integer, whereas the denominator is a positive integer. Such rational number is called a negative rational number or negative rational number. It is written. देखो, एक चीज हमेशा याद रखो, मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ कि how can you find the given rational number is negative rational number or positive rational number. Look, if both the sign, I am talking about both the sign, means I am talking about sign is in numerator and the sign is in denominator. If both the signs are same, then the rational number will be a positive rational number. देखो, suppose करो ये minus 6 by minus 9 है, both the sign are same, तो it means ये positive rational number है. This is positive rational number. Okay, 6 by 9, here we have plus, here we also have plus, so this is also positive rational number. Okay, this is also positive rational number. Remember one thing, if we have same sign in numerator and denominator, then that fraction will be a positive rational number, that rational number will be a positive rational number. देखो यहाँ पे हमें both में हमने we have same sign, negative negative, and we have same sign, positive positive, this both are positive rational number. But when we have the opposite sign in numerator and denominator, that fraction will be, that rational number will be a negative rational number. Suppose minus 6 by 9, here we have minus, here we have plus, opposite sign, so this is negative rational number. 6 upon minus 9, this is also negative rational number. ठीक है, clear हुआ? Now the next topic is, book नहीं है मेरे पास, that's why I am using this. Okay, now let's start. We will discuss the rational number on a number line in exercise, during exercise. Now the next, on page number 177, that rational number in standard form. Look, a rational number is said to be in the standard form if its denominator, this is the definition which is on 178 page number of NCERT. A rational number is said to be in the standard form if its denominator is positive integer and numerator and denominator have no common factor other than 1. देखो इसका मतलब क्या होता है? What does it mean standard form? First of all, you have to know about the standard form. देखो standard form क्या होता है? Math is the subject of smartness. दुनिया के सारे smart बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं. That मुझे लगता है इसी वजह से दुनिया के सारे स्मार्ट टीचर मैथ्स पढ़ाते हैं. Thank you. Now we are talking about standard form. Suppose you have tie, you have belt, you have pant, you have shirt. So what do you have to do? What is the standard form? Or you can say that, or I can say that, what is the standard uniform? So what do you have to do? First of all, you will wear belt, then you will wear pant, then you will wear tie, then you will wear shirt.
No, na. This is not a standard form. So maths also has its standard form. Rational number also has its standard form. You have to write the rational number in its standard form. अगर क्वेश्चन आपका आता है कि write this number in its standard form, so you have to write. तो what does it mean? स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म मींस फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक बात जानिए कि आपको सबसे पहले रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए. अगर मतलब डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे साइन है तो ये क्वेश्चन गलत है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे साइन है तो ये क्वेश्चन गलत है. मैंने कहा कि जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ नेगेटिव नंबर, आप नेगेटिव साइन फ्रॉम डिनोमिनेटर, यू विल रिमूव द नेगेटिव साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर. देखो अब मुझे ये 6 बाई माइनस 9 को मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. सो वी विल मल्टीप्लाई दिस बाई -1 बिकॉज वी वांट टू रिमूव दिस माइनस ना. जब मुझे ये माइनस रिमूव करना है तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाई -1. If I want to remove this minus, so I will multiply this -9 with -1. Clear? ये चीज तुम्हें क्लियर हुई? अच्छा देखो इनके साथ एक चीज है, जो चीजें हम ऐसे लिखते हैं 6/9, 2/3, इनके साथ एक चीज है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एक अच्छे दोस्त हैं, एक अच्छे भाई हैं. जो डिनोमिनेटर को मिलता है वो न्यूमरेटर को भी मिलना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप डिनोमिनेटर को एक गिलास दूध दे रहे हैं तो न्यूमरेटर को नहीं दे रहे, फिर दोनों गुस्सा हो जाएंगे आपसे और आपका आंसर गलत कर देंगे, मार्क्स कम कर देंगे एग्जाम में. सो अगर आपने -1 से मल्टीप्लाई किया है -9 को, तो आप जल्दी से बिना उसको गुस्सा हुए -6 को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो व्हाट वी विल गेट -6/9. देखो ये अभी भी नेगेटिव इंटीजर है. ये पहले नेगेटिव रैशनल नंबर है, ये पहले भी नेगेटिव रैशनल नंबर था और अब भी नेगेटिव रैशनल नंबर है. बट दिस रैशनल नंबर इज इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी भी नहीं आया. ये तो पहला रूल हो गया कि आपको उसके डिनोमिनेटर में से नेगेटिव हटाना है. दिस इज द फर्स्ट रूल. ठीक है. नाउ सेकंड रूल इज कि इट शुड बी इन इट्स लोवेस्ट टर्म. लोवेस्ट टर्म मतलब ये होता है कि आप इसको ऐसे भी लिखें कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 रहे बस. मींस अभी भी ये डिवाइड हो जा रहा है. ये किससे हो जाएगा? 3 से डिवाइड. 3 2 6, 3 3 9. नाउ इट इज इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. अब ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में. क्लियर हो रहा है? दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए. दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म होने के लिए. मेनली ये चीजें जो भी आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, तो आप कहीं पे भी जाते हो एक यूनिफॉर्म होता है ना. अब ऐसा तो आप पैंट शर्ट में जाओगे, ऐसा तो नहीं है कि कल सर हमारे घर में न्यू बॉर्न बेबी है, उसके लिए पैंट शर्ट कहां से लेकर आया आप वाला. मींस स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? दो चीजें बहुत रिक्वायरमेंट है इसकी. इसके लिए रिक्वायर्ड है कि डिनोमिनेटर, remove the negative side from the denominator, and the rational number should be in its lowest term. What does it mean? What is the meaning of lowest term? कि आप उसको तब तक डिवाइड मतलब तब तक काटते रहो जब तक कि वो अपने लोवेस्ट टर्म में ना बन जाए. मींस कि one is only factor between numerator and denominator. क्लियर हो रहा है? अगला टॉपिक देखें. कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर. कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर ये हम लोग वी विल डिस्कस इट इन ड्यूरिंग एक्सरसाइज. रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर वी विल आल्सो डिस्कस इट ड्यूरिंग एक्सरसाइज. चलो एक्सरसाइज 9.1. एक्सरसाइज 9.1 लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 and 0. यू हैव टू राइट एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज है ये? 9.1. एक्सरसाइज 9.1. लिस्ट 5 रैशनल नंबर. यू हैव टू लिस्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन -1 and 0. आपको -1 and 0 के बीच में 5 रैशनल नंबर. अच्छा क्वेश्चन ये है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर लिख सकते हैं? इनफाइनाइट. बहुत बहुत इनफाइनाइट. तो -1 and 0 के बीच में हमें रैशनल नंबर लिखना है 5. कितने रैशनल नंबर लिखने हैं? 5. तो एक तरीका तो ये है इसे सॉल्व करने का. The one method is कि how can you divide how can you find the rational 5 rational number between these two rational number. So my dear friend, multiply this by 6. You can write -1 like you can write -1 as -1 upon n, -1 upon 1,
तो multiplied by 6 because you have to find 5 rational number. If you want to find 6 rational number, you will multiply by 7. देखो यहाँ पे एक चीज है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना सेम होना चाहिए. Now 0 upon 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 by 1. So we will also multiply it by 6. आप इसके साथ कर सकते हो. अगर आपके पास रैशनल नंबर है, अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर रहे हो तो ये आप कर सकते हो. इसके लिए आपको कोई रोकेगा नहीं. सो ये क्या हो जाएगा? -6 upon 6, -6 upon 6, और ये क्या हो जाएगा? 0 upon 6. अब इसके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर मिल जाएंगे. कौन कौन से? -5 upon 6, -4 by 6, -3 by 6, -2 by 6, -1 by 6. ये हमें 5 रैशनल नंबर मिल चुके. नाउ फाइंड क्वेश्चन नंबर. आप फर्स्ट का सेकंड पार्ट खुद करोगे, थर्ड पार्ट मैं बता रहा हूं. अब यहां पे देखो ये क्या है? -4 by 5 and -2 by 3. First of all, you have to make their denominator equal by finding their LCM. आप पहले इसका डिनोमिनेटर को इक्वल करो इसके एलसीएम को फाइंड करके. You know what is the LCM of 5 and 3? 15. So we will make this equal to 15. We will make the denominator of this equal to 15. For this we have to multiply this by 3. So we will also multiply the numerator by 3 and this by 5, and we will also multiply this numerator by 5. So we will get 12 upon 15 and -10 upon 15. Okay. लेकिन look here, you have to find 5 rational number between this. You have to find 5 rational number between this. But according to this, you will find only 1 rational number. अभी तो तुम्हें 1 ही rational number मिल रहा है, but you have to find 5 rational number according to the question. So what you have to do? आपको क्या करना होगा? हम इसको फिर से multiply कर सकते हैं हमसे ना. by the same number हम कभी भी कर सकते हैं. upon 10 से कर दो. So we will get 120 upon 150 and 100 upon 150. अब -120 और -100 upon 150 के बीच में कितने रैशनल नंबर आएंगे? काउंट कर लो, कम से कम 20 तो आएंगे. तो उसमें से आप कोई भी 5 लिख सकते हो. यू कैन राइट एनी 5 ऑफ देम. आप इसके बीच में जैसे कौन कौन से आएंगे? -101 upon 15, -102 upon 150, -103 upon 150, -104 upon 150, -105 upon 153, -119 upon 150. Take any 5 of them. Okay. Write 4 more rational numbers in each of the following. See the pattern. The first question is -3 by 5, -6 by 10, -9 by 15, -12 by 20, so on. So what you have to do? 4 more fractional number हमें लिखना है in each of the following patterns. So first of all, you have to recognize the pattern. आपको देखना होगा कि इस पैटर्न में हो क्या रहा है. So what you have to do? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमें कैसे मिला? इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमें ये मिला ना. 3 2 6, 3 5 10. When we multiply this by 3, we will get this. When we multiply this and this by 4, we will get this. Again, when we multiply this and this by 5, 6, 7, 4 more फाइंड करना है ना. And 8, -15, -15 upon 25, -18 upon 30, -21 upon 35, and -24 upon 40. These are the 4 rational number. Next 4 rational number of this pattern. So okay, now second question है, ये आपका homework होगा. Find the pattern and find 4 more rational number. Okay, that's it. Exercise 9.1 finish. And all the best.